Hi, Mahima, this is Pooja from The Week. Hi. Kudos to you for really pulling this through and surviving through the journey. Tell us about the most challenging moments that you encountered during your journey. You know, any 2, 3 times when you really felt, I mean, that, you know, you felt like giving up, but you didn't. Yeah. I think it'll motivate all of us. I think they say na, the treatment is worse than the disease. Chemo is a very, very difficult treatment to take, but you have to take it. So I think my chemos were very difficult for me to handle, and especially because physically आपके सारे बाल झड़ जाते हैं, because cancer cells fast growing हैं, तो आपके सारे fast growing cells मर जाते हैं, तो आपके बाल चले जाते हैं और एकदम से आप बीमार लगते हो. जैसे अगर किसी को और कोई दिक्कत है हार्ट की, उसकी आपको देखते ही नहीं लगेगा, बट कैंसर पेशेंट्स को आप समझ जाते हो कैंसर पेशेंट्स हैं. तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी मुझे उस तरह से देखे, क्योंकि मुझे समझ थी कि मेरा अर्ली डिटेक्शन है. मेरे डॉक्टर्स बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहे थे, ओ तुम्हारा बहुत जल्दी डिटेक्ट हुआ है, ये क्योर हो जाएगा. बट मेरी बच्ची छोटी है, तो आई डिडंट वांट हर टू थिंक कि समथिंग इज रॉन्ग विथ मी. तो आई थिंक वो सबसे डिफिकल्ट होता है कि बच्चा आपको नहीं देखे और आप स्ट्रॉन्ग फील करें, और कीमो में आप लेटे रहते हो तो उनको लगता है ये तो बहुत बीमार हो गई मम्मी, नाउ शी इज गोइंग, शी इज लाइंग टू मी. सो आई थिंक वो एक इमोशनली डिफिकल्ट टाइम था. एंड जैसे आप देख सकते हो, ये आपको रैटल कर देता है, ये जो आपका डिटेक्शन होता है. आप देख रहे हो अभी भी मैं रो रही हूँ एंड ऑल दैट. तो मैं सभी कैंसर पेशेंट्स को कहूँगी कि यस, कोई भी स्ट्रांग नहीं होता. मुझे भी लोग बोलते हैं मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे नहीं लगता मैं स्ट्रांग हूँ, और जरूरी नहीं है आप स्ट्रांग रहो, बस आप अवेयर रहो, एडुकेटेड रहो, और अगर आपको नॉलेज है तो उसमें आप कुछ करो, मतलब टेक एक्शन, और हर महीने एग्जामिनेशन करो. क्योंकि अगर होना ही है, और चांसेस इंक्रीज हो रहे हैं विमेन के हमारे हिंदुस्तान में और सभी जगह, तो जल्दी पकड़ लेंगे तो आपका इलाज हो जाएगा. तो ये बार बार मैं रिटरेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ आप लोगों को, ये बहुत ज़रूरी है. हेलो. बाकी आप रोना चाहते हो रो, आपको दुख होगा, आप गिरोगे, ये सब रहेगा, आपको लगेगा कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा, बट वो धीरे धीरे एक एक स्टेप करके आप ट्रीटमेंट कर लेते हो. और फिर आप जब मिलते हो, जैसे मैं आज देविका जी से मिली हूँ, वो बोलती है मैंने 20 इयर्स हो गए, 20 इयर्स बैक हुआ था. तो मुझे इतनी उम्मीद लेकर जा रही हूँ आज मैं कि यू नो आई डोंट हैव टू थिंक आई हैव अ शॉर्ट लाइफ, यू नो, बिकॉज हमें भी डर लगा रहता है, व्हाट इफ इट कम्स बैक, यू नो. मुझे क्या करना चाहिए. जैसे मैंने डॉक्टर नायर से पूछा कि यू नो इसके बाद मैं आपसे बहुत चिट-चैट करूंगी, बिकॉज मुझे बताना कि इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए. यू नो, मुझे ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बिल्कुल नहीं आता, मैं तो ये बॉटल से सीखूंगी, ये हग ऑफ लाइफ से सीखूंगी. तो आप लोग भी जरूर सीखिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Hello. Good afternoon. I'm this Raj from Sansandwani Publication. It's for Mahima Chaudhry. I'd like to ask that what's the reason behind this breast cancer? I really don't know. जैसे कुछ कैंसर्स हैं, जैसे कोलोन कैंसर या वगैरह, वो आपके डाइट के ऊपर हो सकता है. बट आई थिंक जितने, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बट जितने विमेन के कैंसर्स होते हैं, ओवेरियन, यूट्रस, ब्रेस्ट, ये सब आई थिंक हार्मोनल रिलेटेड होते हैं, थोड़े जेनेटिक होते हैं. मेरे घर में दूर दूर तक किसी को ब्रेस्ट कैंसर तो हुआ ही नहीं, कोई भी कैंसर नहीं हुआ था, तो मुझे कैंसर का डर था ही नहीं. बट शायद कुछ जीन्स स्किप भी करते हैं जनरेशन्स को, तो मुझे नहीं पता ये क्या है, बट डॉक्टर साहब बता पाएंगे कि यू नो रिस्क फैक्टर्स क्या हैं. हर डिजीज का जो रिस्क फैक्टर है वो भी इसी का रिस्क फैक्टर है, एंड दैट इज अच्छी लाइफस्टाइल अगर आपकी ना हुई, वेट ज़्यादा है, कचरा खाते हो, नींद नहीं होती आपकी ठीक से, एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं आई थिंक जो इम्पैक्ट करती हैं, आपके चांसेस को रिड्यूस करती हैं. लेकिन आपके पास अगर जीन्स है तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. जैसे मुझे आप
पूछेंगे तो हिम्मत कहाँ से मिली, जैसे मैंने एंजेलिना जोली जो हमारी हॉलीवुड की बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, उन्होंने बात की थी कि उनको जेनेटिकली एक जीन्स हैं जो उनकी मासी को भी था, मदर को भी था, और दोनों की डेथ उसी से हुई। तो उन्होंने अपनी दोनों ब्रेस्ट की मैस्टेक्टमी कराई कि आई डोंट वांट दिस। उन्होंने अपना यूट्रस, आई थिंक वो ओवरीज भी निकाल दी थी, बिकॉज उनके चांसेस बहुत हाई थे। मुझे वो डिसीजन, इट इम्पैक्टेड मी कि लुक एट दिस पर्सन, शी इज सो स्ट्रांग, शी इज टेकन अ कॉल। इसीलिए जब मैं डॉक्टर के पास बैठी थी एंड डॉक्टर सजेस्ट कर रहे थे कि शायद तुम्हें ये है और ये करना पड़ेगा, मैंने कहा डॉक्टर आप सब निकाल दो, दोनों ब्रेस्ट निकाल दो, यू नो, बिकॉज हमारे सामने इतने ब्रेव ब्रेव एग्जाम्पल्स दिखते हैं। तो आज मैं जब लोगों के सामने बात करती हूँ, आई नो क्या इम्पैक्ट होगा औरतों के ऊपर। अगर 10% औरतें भी इस बात को समझ लें जो मैं कह रही हूँ, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। ज़्यादा करके बॉलीवुड एक्टर्स को कैंसर होता है, इसके पीछे मतलब रीज़न क्या है? ज्यादातर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को होता है। या सो 1 सेकेंड, एक तो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि एक तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को नहीं होता है। हम लकी हैं कि हमारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस जिनको हुआ है आगे आके बात करती हैं और अवेयरनेस क्रिएट करती हैं, इसीलिए आपको लगता है कि उन्हें होता है। इस रूम में जितनी महिलाएं हैं, एवरीवन इज एट रिस्क. Out of that, 2 are women who have stood up for you in front of you and are able to talk to you and tell you about their journey. So this is not about something that they have done, they have been able to do. This is just them being brave enough to stand up. Mahima madam ne jo aapko bataya is absolutely perfect, and I think that was very well said on risk factors. 10% genetic hota hai. वो जेनेटिक रिस्क आपका रिस्क बहुत हाई कर देता है, ऑलमोस्ट 80% रिस्क हो जाता है आपको कैंसर होने का। 90% ब्रेस्ट कैंसर बिना जेनेटिक्स के होता है। इन दैट रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? कुछ होते हैं जो हम उनका कुछ नहीं कर सकते हैं, जिसे हम नॉन मॉडिफाइबल कहते हैं। जस्ट सिंपली बीइंग अ वुमन, बीइंग अ फीमेल जेंडर इंक्रीजेज आवर रिस्क कंपेयर्ड टू मेन। एजिंग इंक्रीजेज आवर रिस्क. Having a family history increases our risk. The age at which we start our periods or menstruating, the age at which we stop menstruating, these are exposures to hormone that increase our risk. But then there are certain things that we can change to reduce our risk. And the first and the most important of that is lifestyle. Something as simple as कि obesity increases risk of breast cancer, especially जैसे हम postmenopausal obesity कहते हैं, क्योंकि that is increased circulating hormones even after your periods stop. The second is having your child late, not breastfeeding your children. These are all urbanization of society. This is changing the way risk factors increase. But maintaining a healthy diet, maintaining a healthy lifestyle, and a positive attitude, I think, is what's going to help us forward with better risk. Unfortunately, and मैंने आपको ये पहले भी कहा था, हम prevent नहीं कर सकते हैं, हम इसको early detect कर सकते हैं, हम जान सकते हैं हमारे risk factors क्या हैं और हम उन्हें reduce करते हैं. Exposure to hormones increases hormone-based cancers like breast, like uterine, etc. Reducing this exposure by not indulging in certain activities which increase our risk, which is lifestyle related, sedentary lifestyles, not exercising, increases our risk. We also ask our women, and we're fortunate क्योंकि हमारी जो climate है does not require a lot of hormone replacement therapy. Unfortunately, West में climate अलग है, उनके problems अलग होते हैं. Hormone replacement therapy जब आप menopause में चले जाते हैं, वो आपका risk increase करता है. So today, very few women will actually take the tablets for hormone replacement. Oral contraceptives don't increase your risk. It's not that stop taking oral contraceptives. The kind of formulations available today do not increase risk. Understand what increases risk. Understand that the routine population is at risk. It has nothing to do with just a certain profession, just a certain group. The only group which is at extremely high risk is a genetic based population, and that unfortunately is something we can do nothing about. Hello.
So genomic testing is one, I don't recommend it without getting counseled very well. There are specific patients whom, or women that we would recommend it to, either if you have family history of breast or ovarian cancers, or if you have a male relative who has breast cancer, then we consider it. For women with breast cancer, if they are younger, that is young women with breast cancer under the age of 40, or what we call triple negative breast cancer, where there are 3 receptors in the breast cancer cell. These are associated with genetics, so we recommend it in them. Or if they have bilateral cancers, or if they have breast and ovarian cancers. There are certain specific syndromes in the family where then we look at and recommend it, which is why we always start with genetic counseling, drawing out the family tree of genetics, understanding what your risk potentially could be, and then doing it. As an individual, as a routine population, should we all go out and get a genetic test? I think you're going to create more anxiety than any benefit to the population. Hi. Thank you so much, doctor. Yes. Hi, Samir here from Movie Talkies. My question is to Mahima ma'am. Ma'am, it's easy for us to understand, these complicated medical terms since we are sitting here in urban area, but there are some rural areas, where women are not that educated. So, how do you think, what kind of conversation can convince them to, get into it? I think ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि गांठ सब समझती है एंड मतलब जब मुझे हुआ था तो मेरी सिस्टर की मेड ने भी बताया कि दीदी को बोलो वो ठीक हो जाएंगी. मेरी मम्मी को भी गांठ थी, वो निकाल दिया, अभी ठीक हैं, 7 साल हो गए. तो आई थिंक औरतों को पता है कि गांठ होती है और हमें सिर्फ बताना है कि गांठ अगर हो रही है उसको जल्दी निकाल दो, तुम ठीक हो जाओगे. ये मैसेज देना है. तो आई थिंक वो इस कैंपेन से बहुत क्लियरली एस्टैब्लिश हो जाएगा. और जो डर है वो भी एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है कि जल्दी कराओगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे, देर होगी तो फिर देर हो जाएगी. वो बात समझानी बहुत ज़रूरी है. वो लोग सोचते हैं कि नहीं किसी को नहीं बताएं, जैसे देविका मैम ने बोला कि दे स्कैर्ड टू एड्रेस इट कि लोग मेरे फैमिली वाले मुझे सपोर्ट करेंगे या नहीं, घर भेज देंगे, ऑल ऑफ दैट. तो हमें ये बताना उनको कि अगर तुम्हारी गांठ है जल्दी निकलवा दो, ट्रीटमेंट की शायद ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. मुझे डॉक्टर ने कहा था तुम अगर शायद 6 महीने पहले आती तो कीमो की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम सिर्फ सर्जरी कर देते. मैंने अपना वो जो ईयरली चेकअप था वो 6 मंथ्स लेट किया बिकॉज कोविड चल रहा था, लॉकडाउन था, हर साल कुछ निकला नहीं था, तो बहुत रिलैक्स थी कि ठीक है 6 महीने बाद करा लेंगे. बट डॉक्टर ने कहा नहीं, तुम शायद 4-5 महीने पहले आती तो सर्जरी हो जाती, बस तुम्हें कीमो और ये जो बाकी हार्मोनल थेरेपी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती. सो वो टाइम एम्फसाइज करना आई थिंक इज इम्पोर्टेंट. Hi, this is Sohail over here from Instant Bollywood. Hi Mahima, how are you? So good to see you. You're looking very beautiful. Thank you. अच्छा, as you said, like पहले तो वो जो डॉक्टर ने कहा था कि जो सर्वाइवर जो वर्ड है, like she calls it thriver. Yeah. तो I too agree on that thing because कोई भी बीमारी हो, चाहे एक कोई टाइफाइड हो या अगर किसी को एक्सीडेंट हो गया और वो सर्वाइव करता तो हम उनको एक्सीडेंट सर्वाइवर नहीं कहेंगे. I just feel it like that. या मे बी किसी को बुखार हुआ, टाइफाइड से अगर वो बच गया तो टाइफाइड सर्वाइवर नहीं कहते. वाई लाइक कैंसर से अगर हम सर्वाइव करते तो कैंसर सर्वाइवर बोलते हैं. मे बी द रिस्क माइट बी देयर, ज्यादा होता है उसके बचने के, बट एज यू सेड कि यू वर अ बिट लेट, दैट इज व्हाई यू हैड टू गो फॉर अ कीमो एक्चुअली. तो उसी तरह से मतलब अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जाए तो उसके लिए आई जस्ट हैड अ सजेशन लाइक वी हैव लॉट्स ऑफ क्लिनिक वे द MBBS doctors are there when we go for a normal fever or anything. वहाँ पर एक something like रहता है, but it should be on a little bit more force कि cancer को detect करने के लिए there should be some test going on, all of those things. My question comes to you कि Mahima, as you said कि you have survived through this thing, you are a fighter, but still as you said like their monthly checkup has to be there, but you are not doing that thing, and you're agreeing to that thing. That's a big thing. So what is that mental setback, which you have to already gone through? तो ऐसे लोग जिनको नहीं कुछ हुआ है तो वो लोग तो उस चीज को फिर बहुत एक सेकेंडरी वे में लेंगे. तो what is that one message you would like to give in a very strong way?
ये कि हम औरतों को खुद को टाइम देना, इम्पोर्टेंस देना एक महत्व बात नहीं है, स्पेशली हमारे देश में. वी डोंट गिव आवरसेल्व्स इम्पोर्टेंस. एंड मेरा तो कॉन्फिडेंस नहीं है लंप को समझने का, तो इसलिए मैं करती हूँ, बट मुझे समझ नहीं आया अभी तक. तो ये जो हमारी हग ऑफ लाइफ की बॉटल है, दैट इज अ गुड ट्यूटोरियल. किस तरह के लम्प्स होते हैं. मैंने जैसे कहा, मुझे हर लंप लंप लगता है, सो लम्प्स होंगे, बट कौन से लम्प्स कैंसेरियस होते हैं, कौन से नहीं, which is part of your body. If you do it every month, then you'll understand. So yeah, so that training is very important. And आप जो बोल रहे हो, हर क्लिनिक में हमारे इंडिया में औरतें नहीं जाएंगी एग्जामिनेशन करवाने, वो 1 घंटा भी ऑफ नहीं लेंगी जाने के लिए हर महीने. तो उनको खुद सिखा दें तो ये बहुत बड़ी बात है, खुद सीख लें वो. और हमारी औरतें बहुत तेज हैं, उन्होंने बहुत कुछ सीखा हुआ है. they just need to be pushed and told and made aware. And you said like cancer survivor, you supposed to say something. What was that? Like we should not call cancer survivor. I asked something. शायद आप कुछ. You should call them thrivers. I think Hayami fighters. Yeah. वो जो term है. हाँ, उनको thrivers ही बोलेंगे आज से. मेरे को thriver ही बोलना. Okay, thank you. And एक बात और, ऐसा नहीं है कि आदमियों को breast cancer नहीं होता. There is a small chance that even men can get breast cancer. So if it's there in your family history, you're more likely to be at a risk. So, when you're doing your yearly checkups, I think men should also get themselves checked. Thank you so much. I think we can take one last question. Yeah. Good afternoon, ma'am. Savita Bajaj here. I'm with Savvy World. So I have been an international fixer producer to so many of the top-notch international media houses in Mumbai. I have so many stories that I've encountered. I've also been, Mr. Ravindra, thank you so much for getting so many inspiring stories together. In spite of it all, I've been a caregiver also to my sister who went through an end of life care. I think these stories, these have to be told regularly because I mean, in spite of it all, in spite of knowing and experiencing so many things, I've still not learned my lesson. I still need a constant reminder. I think we desperately need support. These kind of platforms, if SBI Life has done a commendable job, but we need more of these platforms, these kind of support, care to come through, which will help everybody. I mean, at every stage, whether you're a corporate, whether you're a youngster, whether you're in your 40s, you're going through menopause, or you're a caregiver. Even a caregiver has a lot of support that they need. How to take care of patients, what are the do's, don'ts. There are myths, like we just heard of certain questions being thrown to you. There's so many myths and facts which have to be corrected and put in order. Thank you so much. You're right, absolutely right. But now we have so many corporates where women, there are a large number of women. So I think if one day in the month, the corporates reassert and remind people, not just women, just everybody about their health. Have they got their insurance in place? All of that. Have they done their checkups? It would go a long way. Just to support your thought, as I mentioned earlier also, we gonna call out to other organizations. Okay, we gonna talk to them. Okay, that please participate into this cause. Join the cause. Even in the website, when you order it, there is an option given. Where from a corporate you are reaching out for joining this cause. So that is one kind of one thing which we are trying to use and expand. And as I mentioned, we are planning to do a lot of workshops in rural India. I'll just share one experience. In 2019, there is this village in Haryana which has a very high percentage of breast cancer. It is actually concentrated. Within a certain kilometer, that area, lot of women were getting breast cancer.
we started the workshop there. We had to stop it because suddenly, after a period of time, from multiple villages, not only women, even men came in. That क्योंकि मेरे घर पे women नहीं है, तो मैं जाके देख लेता हूँ ये क्या है. So it was very interesting to know that once they realized, they wanted to be a part of this program and see that how they can benefit the women within the household. So that is the change we are seeing in the real Bharat, if I have to put it across, that वो taboo है, but धीरे धीरे कम हो रहा है. We will continue this, as a brand, as an organization. I can assure you this is the 5th year. Will we stop it? Answer is no. We will continue this effort. Another is we want to be participative. We don't want it to be a monologue. कि हमने communication कर दिया कि awareness बढ़ाओ. Yes, that is also required. But as we mentioned that as a brand, we want to make a meaningful difference. Hamara brand purpose is all about liberating individuals so that they can fulfill their dream. So this thought process is basically to liberate the women from that thought process कि अगर मुझे cancer हो गया तो मुझे emotionally और financially problem होगा. तो वहाँ पे as a brand we want to become a part of their life and actually take them out of that fear. So that's the whole thought process. Thanks. So, if I can just say something, Neeta, as a healthcare provider, I can tell you we do our bit, but we require our thrivers to come forward and talk, because only when they tell you their story, only when you see their success, do you understand they go through so much during treatment. It really takes a toll. I mean, I see this every single day. We empathize with them, but what they go through, only they know. And the strength that a woman shows you by standing there and talking about the journey she's been through is what's going to help our country. Thank you so much, Mahima. And I just want to say, like you mentioned caregiver, जब मेरा ये डिटेक्ट हुआ तब मेरी मम्मी बहुत डिफ़िकल्ट स्टेट में थी. वो काफ़ी सालों से पार्किंसन से स्ट्रगल कर रही थी. तो लॉकडाउन में हमारे घर में आईसीयू था, नर्सेस थी, आईसीयू नर्सेस थी. हम चाह रहे थे कि उनको किसी टाइप का इन्फेक्शन नहीं हो, कि बहुत कमज़ोर हो गई थी कि उनको हॉस्पिटल जाना पड़े. तो मैं उनकी केयरगिवर थी एंड मेरे को हो गया. तो 1 महीने पहले मेरे डैड जो 80 इयर्स ओल्ड हैं, उनको हार्ट में थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस ऐसा आया. वैसे वो बहुत फिट हैं और वो हॉस्पिटल से लौटे ही थे. एंड मैंने जब अपना चेकअप कराया तो मैं एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में थी घर पे, और मेरी बच्ची बहुत छोटी है. तो उस टाइम पे मैंने ये कैंसर उन्हें बिना बताए, मेरी नर्सेस को पता था, बाकी दोस्तों को पता था, बट घर में उनको बिना बताए मैंने अपना ये कैंसर ट्रीटमेंट किया, जो बहुत डिफ़िकल्ट हुआ. तो और आप मेरे इंस्टाग्राम पे अगर जाते तो आपको कुछ नहीं नज़र आता कि इसको कुछ प्रॉब्लम भी है लाइफ में, क्योंकि मैंने अपना जॉब कंटिन्यू रखा, जो भी इंडोर्समेंट्स थे, एड्स शूट किए विग लगा के. तो बहुत लोगों को मैं ये समझाना चाहती हूँ कि आप उसमें मत रहिए कि बाकी लोगों की लाइफ तो बहुत इजी है, एवरीबडी इज गोइंग थ्रू अ गुड टाइम, व्हाई इज दिस हैपन टू मी, मेरे साथ तो इतना पहाड़ टूट रहा है. तो सबके ऊपर टूट रहा है, बट सोशल मीडिया इज अ प्लेस जहाँ पे अपनी आप अच्छी छवि दिखाते हो, तो जस्ट रिमेंबर दैट कभी भी आप किसी भी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि दूसरे लोग नहीं गुजर रहे. सब गुजर रहे हैं, सब हिम्मत से गुजर रहे हैं, सब कोशिश कर रहे हैं. Thank you so much, everyone. I think this was so insightful, informative, and interesting session. That was really fabulous, and I'm glad that looking at your curiosity levels, you want to know more. And of course, we have the solution here for you. One of the easiest solution, we have Hug of Life for you. So do think about that. And of course, now it's time to appreciate and felicitate all our dignitaries, all our esteemed guests. We hand over the memento to Mahima ma'am and welcome her and thank her and appreciate her. Zordar taaliyon se, because it really means a lot that she's given her precious time and she's right here with us.
this afternoon. So thank you so much. Mahima ma'am, you're fabulous. I really love you. You're amazing and super cool woman. More power to you. Talia rukni nahi chahiye. Let's hear it louder for the very gorgeous Mahima Chaudhry. Thank you so much, ma'am. You're so inspiring and motivating. We really love you. Thank you. Well, now I would like to invite on stage Miss Devika Bojwani. Let's hear it louder for Miss Devika Bojwani, ma'am. Please come up. And requesting Ravindra sir to kindly hand over the bouquet and memento. It really means a lot because they've specially come this afternoon, giving their precious time here, and we're very, very proud. Thank you so much, ma'am. I'd also like to invite Dr. Neeta Nair on stage. Let's hear it louder for Dr. Neeta Nair. Kindly come up, ma'am. It's been such an interesting session for coming, creating the awareness, explaining it so well, the concept. Hats off to you guys, and thank you once again. Thank you so much, everyone. Of course, yes, now we can quickly, media friends can come ahead and go for a picture or whatever. You all want photo ops? You can come ahead and go for it. Well, with this, thank you so much for such an interactive session once again, and it's time for a well-deserved break. We are open for lunch. Please enjoy your meals and feel free to connect with our PR team for any further queries. For any further queries, we have our PR team here. You can actually get in touch with them for any further questions. Thank you so much. This is Dhanashree signing off and saying goodbye. Thank you.